नमस्कार, ग्रीटिंग्स फ्रॉम HCFI। मैं आपका दोस्त और आज के कार्यक्रम का होस्ट HCFI की ओर से सभी देखने सुनने वालों, सभी RWAs के मेंबर्स, टेक्सटाइल एसोसिएशंस और मार्केट एसोसिएशंस के मेंबर्स, NGOs तथा HCFI के सदस्यों का और उसके साथ साथ अपनी हेल्थ एजुकेटर फैमिली का आज के इस सेशन नंबर 71 क्यूमुलेटिव सेशन 4101 में स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ फिजियोथेरेपी ड्यूरिंग पैंडेमिक। वैसे तो फिजियोथेरेपी की जरूरत हर समय ही रहती है, लेकिन हमने इसको स्पेशली टेलर किया है कि पैंडेमिक के टाइम में इसकी जरूरत कैसे होती है और क्या क्या तरीके से इसको हम कर सकते हैं और किन किन स्थानों से उपलब्ध है और कैसे कैसे हम इसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए। इन सभी पर चर्चा करने के लिए हमारी हेल्थ एजुकेटर मिनाल शाह हमारे साथ हैं। इससे पहले कि वो अपना विषय रखें, मैं HCFI के डायरेक्टर और अपने मेंटर डॉक्टर के कालरा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोविड अपडेट पर प्रकाश डालें। ओवर टू यू डॉक्टर कालरा। थैंक यू चावला जी। सब उपस्थित लोगों को मेरा प्रणाम। इस 71 सेशन, वीकली सेशन, जो कि कोविड हेल्थ एजुकेटर को समर्पित है और RWA के एसोसिएशन के मेंबर्स और बाकी जो भी उपस्थित व्यक्ति हैं, सबका स्वागत है। आज का कोविड सिचुएशन देखें तो ऑल ओवर इंडिया स्थिति पिछले एक महीने से देखें अगर तो काफी इम्प्रूवमेंट है कि रोज के जो न्यू केसेस हैं लगभग अब पिछले महीने जो 3500 से 4000 रोज हो रहे थे अब और भी कम हो रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 27,176 न्यू केसेस रिपोर्ट हुए हैं और जिसमें से कि 284 डेथ्स हैं। और आउट ऑफ दिस 27,000 जो केरला में भी जो प्रॉब्लम एक महीने से काफी चल रही थी, अब वहां पर डिक्लाइन शुरू हो गया है। अब जो है लास्ट 24 आवर्स में सिर्फ 15,000 केस रिपोर्ट किए गए हैं। तो एग्जैक्ट 15,876 और 129 डेथ्स। महाराष्ट्र भी अब डिक्लाइन शो कर रहा है, जो कि पिछले दिनों में 4,000 से लगभग ऊपर चल रहा था। अब जो है 3,530 न्यू केस लास्ट 24 आवर्स में एंड 52 डेथ्स। अब जो है इस केरला और महाराष्ट्र के अलावा इस हफ्ते जो सिचुएशन है जिसमें कि कंसर्न है वो है मिजोरम स्टेट से और पांडिचेरी स्टेट से। मिजोरम में देखें तो पिछले 24 घंटे में 1185 केस नए ऐड हुए हैं। पिछले 2-3 दिनों में मिजोरम और पांडिचेरी थोड़े से न्यू केसेस में बढ़ोतरी आई है। पांडिचेरी में 103 पर कोई डेथ नहीं है और दिल्ली में जो है सिर्फ लास्ट 24 आवर्स में 38 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नो डेथ्स इन दिल्ली स्टेट फॉर लास्ट 7 डेज। इसके अलावा थोड़ा सा चिंता का विषय है जहां जहां जगह स्टेट्स में टूरिज्म काफी अब चल रहा है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में या हिमाचल में, वहां इन दिनों में पिछले एक महीने में देखें 2-3 हफ्तों से बहुत ही थोड़ी सी जो है इंक्रीज इन केसेस देखा गया है, पर नंबर अभी भी कंट्रोल में है। जैसे JNK में सिर्फ 150 केसेस हैं, नो डेथ्स, और हिमाचल में 195 केस जरूर आए हैं और 3 डेथ्स हैं। पर ओवरऑल सिचुएशन देखें तो हमारे कंट्री में अब पिछले 2-3 हफ्ते से सिचुएशन काफी डेक्लाइनेशन पे चल रही है कि कंट्रोल्ड सिचुएशन है। कर्नाटका में भी सिर्फ 560 के करीब केसेस हैं, तमिलनाडु में भी 1590 के करीब केसेस हैं, वेस्ट बंगाल आल्सो 703।
तो अगर हम अब एक मैं स्लाइड शेयर करूंगा, ये आप स्क्रीन सबको नजर आ रही है मेरी? आ रही है सर, दिखाई दे रही है। हाँ, तो ये जो है WHO की वीकली रिपोर्ट इंडिया सिचुएशन की, जो पिछले हफ्ते थी एंडिंग 7 सितंबर, और उससे पहले के हफ्ते को कंपेयर करें तो 14 स्टेट्स में जो है इंक्रीज दिखाया गया था और 19 स्टेट में डिक्लाइन आया था। तो जैसे अभी मैंने बताया कि कुछ स्टेट जैसे हैं केरला, मिजोरम वगैरह में थोड़ा सा काउंट जो है इस बड़ा है। केरला में तो कम हो रहा है, मिजोरम और पौंडीचेरी में थोड़ा सा इस हफ्ते जो है 2-3 दिनों के अंदर थोड़ा काउंट बढ़ाया गया है। ओवरऑल देख रहे हैं आप इस ग्राफ में, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में डिक्लाइनिंग ट्रेंड चल रहा है, और बाकी कुछ स्टेट्स में जहां डिक्लाइनिंग नहीं है तो बहुत ही कम केसेस जो है 1 to 2% या 3% तक इंक्रीज है पर डे। सिचुएशन जो है ओवरऑल इज वेरी गुड, कंट्रोल में है। अगर WHO का ग्लोबल देखें आप सिचुएशन रिपोर्ट, ग्लोबली हम देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड में भी अगर हम 14 सितंबर का वीक पिछले हफ्ते, इसके एक हफ्ता पहले के वीक से कंपेयर करें तो ओवरऑल पूरे विश्व में केसेस कोविड के और डेथ भी कम हुई हैं। इस हफ्ते 13% डिक्लाइन इन न्यू केसेस और 7% डिक्लाइन इन डेथ्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये रिपोर्ट हुआ है। इसमें जो है अगर फर्दर हम डिटेल्स में जाएं, कंट्री स्पेसिफिक में, रीजन स्पेसिफिक WHO के जो है ऑलमोस्ट सभी रीजन में, चाहे अमेरिका रीजन हो, चाहे यूरोप हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, वेस्टर्न पैसिफिक, अफ्रीकन रीजन, सभी में न्यू केसेस में कमी आई है। सिर्फ जो है डेथ जो है थोड़ी सी बड़ी है अफ्रीकन रीजन में और वेस्टर्न पैसिफिक में 2%, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है ज्यादा। तो ओवरऑल जो है हम विश्व का भी ये सिचुएशन देखें तो कोविड की स्थिति अब डिक्लाइन पे है। खासकर जो हमें जो विशेष चिंता थी बच्चों की, आने में समय में थर्ड वेव आ सकती है और बच्चों को जो बीमारी ज्यादा और बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा और गंभीर बीमारी भी होगी, ये एप्रीहेंशन था। अब जो है रिपोर्ट्स अगर हम देखें, इवन WHO का भी ये डेटा देखें, ये जो सामने स्लाइड दिख रही है, 5 साल अगर 3 ग्रुप्स में बच्चों को बांटे हम, बिलो 5 years 5 से 14 साल और 15 से 24, और इसके बाद एडल्ट, अगर इनको हम जो है ग्रुप्स को एडल्ट्स के साथ कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि ओवरऑल जब से कोविड शुरू हुआ 2019 से, बिलो 5 year में जो न्यू केसेस सिर्फ 1.8% बच्चों में पाया गया और 5 से 14 साल में सिर्फ 6.2%। हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 15 से 24 साल एडोलेसेंट्स में जो है 14.3% में पूरे विश्व में इतने प्रपोर्शन में बच्चों में कंपेयर टू एडल्ट देखें तो ये जो है प्रपोर्शन ऑफ केसेस। और डेथ भी देखें अगर लास्ट कॉलम में तो बिलो 5 year 0.1, 5 to 14 में भी 0.1 और 15 से 24 में 0.4% डेथ देखी गई कंपेयर टू, अगर पूरा हम ग्लोबल का डेटा अडल्ट के साथ मिला के देखें तो ये जो है फिगर्स डेफिनेटली जो बता रही हैं कि बच्चों में, जो कि हम कहते हैं कि बच्चों में सिम्टम बहुत कम होते हैं, इन्फेक्शन भी नहीं होता और ज्यादातर बच्चे एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, ये इतना कम जो प्रपोर्शन हम देख रहे हैं, एक कारण ये भी है क्योंकि बच्चों में जो है ज्यादातर बहुत ही माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक होता है, तो उनका टेस्टिंग जो है, जो पेरेंट्स हैं वो बहुत कम उनका जो है किसी फैसिलिटी में या डॉक्टर मेडिकल कंसल्टेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से कि टेस्ट भी बच्चों का बहुत कम हुआ है।
क्योंकि मेजॉरिटी तो बच्चे जो थे वो माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक है। अब ये इसमें चिंता की बात ये है, चाहे बच्चों में बहुत कम होता है कोविड का इन्फेक्शन, पर इन्फेक्शन स्प्रेड तो वो भी करते हैं ना जो केस डायग्नोज नहीं हुए हैं बच्चों की टेस्टों की कमी से या किसी और कारणवश से, जिनमें कोविड इन्फेक्शन है, दे आर एक्सपोज टू कोविड इन्फेक्शन, वो चाहे बच्चों से बच्चों में या बच्चों से बड़ों में, वो ट्रांसमिशन तो कम्युनिटी में फैला रहे हैं। ये एक एरिया ऑफ कंसर्न है बच्चों में जरूर। इसलिए जो हम कहते हैं कि अगर एडल्ट्स में किसी फैमिली में कोविड है या एक्सपोजर का रिस्क हुआ है, दे आर एक्सपोज, तो जो उस फैमिली में बच्चे भी हैं, हमें उनका टेस्ट जरूर कराना चाहिए। ओवरऑल सिचुएशन हम देखें, अब चारों तरफ रिपोर्ट्स, चाहे हम इंडिया की बात करें या ग्लोबल सिचुएशन की बात करें, बच्चों में जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड सिवियरिटी ऑफ द डिसीज कंपेयर टू एडल्ट काफी कम है। एक कुछ बच्चों में, जो मैं खासकर यूरोप एंड अमेरिका के बच्चों में ज्यादा देखा जाता है, कि जो कोविड के साथ आफ्टर कोविड 2 से 4 हफ्ते के बीच में जो उनको मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसीज होता है, वो प्रपोर्शन भी बहुत कम है। अब इंडिया में भी ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेशन इन चिल्ड्रन में कुछ केसेस जरूर देखे गए हैं, और जब हम ओवरऑल उनका प्रपोर्शन देखते हैं तो ये काफी कम है। इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं है, पर प्रिकॉशन जो है हमें हर हालत में कंटिन्यू करने हैं, खासकर बच्चों को बढ़ाने के लिए। ये जो है अब स्कूल भी खुल रहे हैं, खुलने भी चाहिए। इतने समय से बच्चे घर में बैठे हुए हैं, अभी भी पेरेंट्स बहुत अप्रीहेंसिव है। अगर हम देखें तो कुछ स्कूलों से तो ये रिपोर्ट आती है कि टीचर बैठे हुए हैं, क्लासेस के लिए तैयारी है, पर बच्चे ही बहुत कम आ रहे हैं। तो अगर हम सिचुएशन जो मैंने अभी बताई, जो रीजन दिए, ज्यादा डर का विषय नहीं है। अब बच्चों को स्कूल में जैसे जैसे एज पर पॉलिसी, अब ये बड़े बच्चों की शुरू की है गवर्नमेंट ने, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स स्टार्टेड स्कूल्स इन हायर क्लासेस 9 से 12वीं तक, और उसके बाद छोटे बच्चों को धीरे धीरे करके बुलाया जाएगा। पर पेरेंट्स को जो एप्रीहेंशन है, क्योंकि बच्चों की संख्या अभी स्कूलों में कम देखी जा रही है, अब डरने का विषय नहीं है। विद प्रिकॉशंस, अगर हम सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, मास्किंग खासकर, वी मस्ट कंटिन्यू मास्किंग फॉर अनदर 1 ईयर, सिचुएशन जितनी भी कंट्रोल हो जाए। अब सबको पता है कि केरला में एक और इन्फेक्शन चल रहा है वायरस का, और 1-2 वायरस और भी अब हमारे देश में चल रहे हैं काफी स्टेट्स में। एक तो निपाह वायरस है, निपाह वायरस केरला में है, एक केस रिपोर्ट हुआ, और बाकी जो है स्ट्रॉन्ग सर्विलेंस चल रही है। इसलिए जो है 2 हेल्थ केयर वर्कर्स को भी जिन्होंने इलाज किया था उस बच्चे का, उनमें भी कुछ सिम्टम पाए गए हैं, वो भी क्लोज सर्विलेंस में, आइसोलेशन में है। तो हमें जो इस तरह के प्रिकॉशंस जो है, डेंगू भी आप देख रहे हैं पूरे देश में, अब कुछ इन दिनों में काफी केसेस बढ़ रहे हैं। डेंगू के अलावा कुछ चिकनगुनिया और ये सब मौसम है, वो भी बढ़ेंगे। तो इसलिए जो है ये सारे प्रिकॉशंस जो है, चाहे वो निपाह वायरस से बचाव हो, चाहे कोरोना से हो, चाहे वो डेंगू से हो, मोस्ट ऑफ द जनरल प्रिकॉशंस तो सभी बीमारियों से बचाव में वो सक्षम है। स्पेशली द हैंड हाइजीन, हाथ को अपनी सफाई, हाथ जरूर धोएं समय समय पर, मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, और क्राउडिंग को जो है प्रिवेंट करें। डोंट विजिट क्राउडेड प्लेसेस। एंड वैक्सीनेशन जो है आज की डेट में देखें तो हमारे देश में कोरोना के अगेंस्ट 75.89 करोड़ लोगों को डोजेस जो है ये लोगों को लग चुकी हैं। अगर सिंगल डोज की बात करते हैं तो लगभग 18%, और 56% जो है डबल, जिनको दोनों डोज जो है मिल चुकी है अडल्ट पॉपुलेशन में। अब बच्चों की वैक्सीनेशन की बात करें
तो ऑलरेडी अब जो है उम्मीद है कि जो क्लिनिकल ट्रायल बच्चों में चल रहे थे, 2 कंपनियों के, वो अप्रूवल मिल गया है और अब अक्टूबर एंड में बड़े बच्चों का 12 ईयर ऑनवर्ड वैक्सीनेशन का लगता है कि शुरुआत हो जाएगी। तो की मैसेज यही है कि ऑल कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हमने सीखा है, जो हमें कोविड ने सिखाया है, सारे व्यक्ति प्रिकॉशंस के साथ अपना रूटीन लाइफ शुरू करें, ताकि हमारा जो रूटीन है, लाइफस्टाइल और हमारी इकोनॉमी दोबारा से जो है शुरू हो, सस्टेन हो। और आज का जो टॉपिक है, फिजियोथेरेपी का क्या रोल है। हम जानते हैं सारे कि कोविड एक मल्टी सिस्टम डिसीज है। ये सिर्फ निमोनिया ही नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम ही नहीं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, हमारे जॉइंट्स को, मस्कुलोस्केलेटल, ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। और कोविड के बाद रिकवरी, अब सब लोग जानते हैं कि अब जो है काफी लोग जो हैं कोविड से रिकवरी के बाद एकदम कमजोरी महसूस करते हैं, या उनके सिम्टम परसिस्ट कर रहे हैं मोर देन 3 to 4 वीक्स, इवन 6 महीने, 8 महीने तक सिम्टम, जिसको कि लॉन्ग कोविड बोलते हैं, ये सिम्टम परसिस्ट कर रहे हैं। खासकर ये जो फैटीग है, क्रॉनिक फैटीग, या स्केलेटल मसल जो है, हमारे हड्डियों की और मसल्स में जो वीकनेस है या पेन है, या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ब्रेथलेसनेस हो रही है, निमोनिया की रिकवरी, कार्डियक प्रॉब्लम जो होती है, लगभग 20% में कार्डियक इन्वॉल्वमेंट भी हो रही है, इसकी वजह से बाद में थकान और सांस फूलना, ये सब देखा जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि कोविड की रिकवरी के बाद बहुत ही ग्रेजुअली जो है व्यक्ति जो है वो अपने रूटीन एक्टिविटी शुरू करे। और जिनको जो है क्रिटिकल केयर से जो निकल के आए हैं, या जिनको लॉन्ग सिम्टम्स हैं मसल्स के और बोन्स के, या रेस्पिरेटरी सिस्टम के, कार्डियक की जो इन्वॉल्वमेंट फीचर्स हैं, उनको जो है फिजियोथेरेपी बहुत ही यूजफुल है फॉर देयर रेस्टोरेशन ऑफ देयर, जितनी पोटेंशियल है उनकी एक्टिविटी रिजम्पशन के लिए, पूरा जो है रिकवरी के लिए फिजियोथेरेपी एक बहुत ही बड़ा टूल है। इसका अहम एक है कि ग्रेजुअली कैसे हम जो व्यक्ति को धीरे धीरे ग्रेजुअली थ्रू फिजियोथेरेपी उसका जितना भी पोटेंशियल है, रिजर्व है, उसका पूरा जो है उसको कैसे जो है रूटीन एक्टिविटी उसका जो है रिकवरी कैसे जैसे इम्प्रूवमेंट करी जाए। इसके बारे में डॉक्टर मिनाल शाह is among us. I will request Chawla ji to invite her to deliver her talk. Thank you. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर कालरा। खतरा कम जरूर हुआ है लेकिन टला नहीं है, इसलिए सभी को अपना ख्याल रखना जरूरी है और कोरोना प्रोटोकॉल का फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसी कड़ी में हमने एक व्यवस्था की है कि फिजियोथेरेपी इज ए लॉन्ग सब्जेक्ट, तो उस सब्जेक्ट के ऊपर हमने एक प्रयास किया है कि आगे आने वाले दिनों में, महीने में या 2 हफ्ते में एक सेशन फिजियोथेरेपी का रखा जाए, ताकि हम अपने आप को पोस्ट कोविड अपने आप को या अन्य बीमारियों से किस तरह से अपने आप को रिकवरी फास्ट कर सकें और अपने आप को रिहेबिलिटेट कर सकें। उसमें विभिन्न विषयों पर हर प्रोग्राम में, सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। आज इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजियोथेरेपी, आज उसका इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। व्हाट इज फिजियोथेरेपी, व्हेन एंड वेयर शुड वी अवेल इट। और उस सेशन को लेने के लिए हमारे बीच मिनाल शाह हैं। She doesn't need any introduction. She's our health educator from our health educator family. She's also an active member of HCFI. So I have invited Minal Shah to kindly take today's session and enlighten all our participants about physiotherapy. Over to you, Minal. You're welcome. Hello, am I audible? You are audible.
Good afternoon, everybody. I am Meenal Shah. I am a physiotherapist from Mumbai. The amazing news is this is going to be a series of different sessions over a period of 2 to 3 months, where we will talk about physiotherapy and how you can make the most of it. So, a basic gist of what you're about to see is the first one that we are taking today, importance of physiotherapy during pain management. नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि फिजियोथेरेपी फर्स्ट एड एंड पेन मैनेजमेंट. कभी आपको कुछ सडनली इश्यू आ गया, सम न्यू पेन, सम सडन पेन, एंड यू आर गोइंग टू टेक टाइम टू रीच अनदर हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर, हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ लिटिल थिंग्स योरसेल्फ. फिर हम अपर लिम मतलब योर हैंड्स एंड योर शोल्डर, उसकी वील गो डीप इनटू इट. देन लोअर लिम व्हिच इज योर लेग्स. And uske baad ke lecture mein we'll talk about some physiotherapy hacks which you can use for your own benefit. And last we'll keep one session for Q&A if anybody has any doubts or wants to clear out something at the end. Today's session we will be talking about the importance of physiotherapy during a global pandemic. At the end of this session, we will have around 12 minutes to take up questions. So during the session, if you have any questions or doubts, just jot them down or put them in the chat box and I will get back to that later. Okay? One second. Yeah. So can you see my screen properly? Yes, it's clear. Okay, good. So, one second. So what is physiotherapy? Physiotherapy is a mode of treatment or a way of treatment where we use two most important things. One is exercise therapy or exercise prescription, and the second aspect is electrotherapy, where we use, can you see these electrodes on people? Yes. Where we use very, very minor currents to alternate pain or work with healing of a tissue. And exercise therapy, as we all know it, and we will dive deeper today. So physiotherapy kisko chahiye? Like who needs it? Who requires it? The beauty of physiotherapy is it can help you from the moment you're born. Like even a premature infant, as you can see in the picture, can benefit from physiotherapy, as well as somebody with a terminal disease. So it's like an end-to-end situation where it has so much to give you if you know how to take advantage of it. It has so much to contribute to you and your well-being. You just need to know the right kind of therapy to take at the right time. So let's dive deeper into this. So there was a research done by talking to a lot of people and giving out surveys that what is the general attitude of Indians towards physiotherapy. Usually हमने ये देखा है कि people will not go to a physiotherapist first. If they have any back pain, any shoulder pain, any injury, they will either go to their ortho or their general practitioner. But why is that happening? So what we found out after talking to people is there is a slight hesitancy that they feel कि हमें कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए हमें पता नहीं है, so we will just go to our GP. So to such situations, a lot of things, a lot of surgery, a lot of medication can be avoided if you are presented with right physiotherapy at the right time. Which is why I am a huge advocate of the concept of a family physiotherapist. As we all know, we have that one particular doctor who has seen our grandfather, father, kids, their kids. And similarly, they know your family, they know how your lifestyle is, and they can help you better. And even we feel comfortable with them. We would not keep changing our doctors. So I feel every family needs to have their own physiotherapist so that they can make sure the body that they have doesn't go below the optimal level of performance. And if it does, they have a physiotherapist on call to deal with it or to work around it. So we'll dive a little bit into the subdivisions of physiotherapy so you can know कि कौन से issue में physiotherapy आपको benefit कर सकती है.
So the first one is musculoskeletal, as Dr. KK said, cardiorespiratory, neurology. We also have pre-op and post-op. Sports, we have all seen it. Pediatrics, your infants and babies. Vestibular rehab, when you have an injury or a road traffic accident and you lose your sense of balance, physiotherapy can also help with that. Then there is also cancer. Cancer obviously makes you extremely tired, and doing simple everyday tasks can be difficult, but with the help of physiotherapy techniques and therapy, you can make sure that you can at least do your day-to-day life, or have a pain-free experience of battling the disease. Then there is also women's health. I will talk in brief about each of these sections so you have a better understanding. Musculoskeletal is the most common form of physiotherapy as we know it. आपके bones, muscles, ligaments, back pain, knee pain, shoulder pain, your fractures, muscle tear, everything comes under musculoskeletal physiotherapy. And you would, this is the most widely practiced physiotherapy, by the way. And when you have an injury which involves a sprain, pain, you would ideally go to a musculoskeletal physiotherapist. The next one, the most popular one right now, is cardiothoracic physiotherapy. As we know it, it is very helpful in when you have the COVID disease, when you have long COVID symptoms, when you're experiencing fatigue. There are ways that you can tweak your cardiovascular system to work better, and you can train it to keep getting better and better with age instead of going downhill. It also helps with asthma. This is majorly used in an ICU setting. In an ICU setting, when the person is dependent on a ventilator for the lungs to inflate and deflate, physiotherapy makes sure it is done at the best level possible. Then you have neurological physiotherapy. Now, this is a type of physiotherapy which lasts for the longest amount of time, usually, because after a patient suffers a stroke, paralysis, or a nerve injury, it takes a really long time. It is probably the most painstaking type of physiotherapy, but it has been shown time and again that it can revive the function in the limb or the muscle which had a damaged nerve. So that is also possible with sustained physiotherapy and consistent efforts. Then we have physiotherapy in rehab. This is something where we use before a surgery, which is the prehab, and after the surgery. So usually after fractures and surgeries, you spend a lot of time on your bed, you spend a lot of time in the hospitals. So overall, your body starts getting deconditioned. So physiotherapy before the operation, make sure you maintain your level of function. And after the operation, they make sure that whatever has gone down comes back up to its normal levels, which were meant for your body. You also have amputee rehab. Right after an amputation, people need extended physiotherapy to get used to either an artificial limb and how to use crutches, how to use various walking aids to start getting into the society again. This is the most commonly seen type of physiotherapy. We see it on TV in your sports and games, sudden injuries, muscle tears, sprains, sports-related injuries. That also comes under types of physiotherapy. Pediatric physiotherapy. This is usually used in kids with spinal cord disorders. Autism also uses some amount of physiotherapy to make the kids' lives easier. We use it in congenital dislocations or other conditions which are congenitally present in the kid. This is a very interesting line of physiotherapy called vestibular rehab. We end up creating an artificial environment for the patient to regain his sense of balance, which can be damaged through a road traffic accident or a sudden trauma to the head or the ear. And then we also use physiotherapy in cancer, like we said earlier. Women's health. I've had amazing experiences with this type of physiotherapy. This type of physiotherapy, other than orthopedics, I have seen a lot of surgeries getting cancelled because of consistent efforts of the patient and the therapist.
This is not still very well known in our country yet, but I'm hoping that changes in the coming years. Women's health physiotherapy basically deals with the pelvic muscles pre-pregnancy, during the pregnancy, and after the pregnancy, which makes sure that the mother has an easier labor. She doesn't suffer from longer effects of pregnancy, like back pain, then the how the muscles feel after it, the constant ache that they feel in the tailbone. All of that can be avoided if there is appropriate training and therapy given during the pregnancy as well as after the pregnancy. Then even in women around perimenopausal age, you see a lot of cases of a uterine prolapse or a vaginal prolapse. I have personally seen cases where the lady was supposed to be scheduled for surgery, but we thought we'll give physiotherapy a chance, and we started working on her pelvic floor muscles. And the gynecologist himself said that she doesn't need a surgery anymore. She's doing absolutely okay. So this is possible if you know when to approach a physiotherapist. Now, why do we need physiotherapy during the pandemic? One thing we have seen very clearly in the last 2 years, that because of this condition, we have completely changed our lifestyle. We are sitting longer hours, we are home more, the physical activity has come down to a significant amount. The amount of work and the type of work we do has also changed, which we were not accustomed to before. And now, because of the awareness that people have had, they have the desire to keep fit, which engages them in newer activities. So when you bring all these changes in picture, obviously your body is going to need some support because you've not done that before. Which is why I want to make sure that everybody who goes through these changes or deals with it has a physiotherapist at their back end to make sure you do the activity. If an injury happens or you have a backlash, we will work on it and go over it. And we do not need to resort to medication or surgery every time. We want to try and avoid it. Because even after you get the surgery done or have the medication, you would still need physiotherapy to make sure the surgery doesn't go waste. After the surgery is done, you need to make sure that the surgery that the surgeon put in hours into does not go to waste. So again, you will require physiotherapy. So why not try it before and see if you can keep medicines and surgery at bay? I'm not saying it's absolutely 100% the case in every case, but in a lot of cases, you can see that you can skip those stages of healing if you get physiotherapy at the right time. So because of the pandemic, we also have started with something called telephysiotherapy now. It wasn't being done before, but the beauty of this is even through a screen, we can still diagnose, assess, and treat, and give you an exercise prescription protocol to deal with your injury. And the best part about this is you do not have to touch anyone. You do not have to leave your house. It cuts out your travel time. And the fact that there are not so many factors governing whether you can go to a clinic or not, make sure that you come for the sessions and you complete them because you're at the comfort of your own house. Now that we know how or when we want to approach a physiotherapist, I also want to give you a few tips from my experience that how you should choose a physiotherapist and how you should not choose a physiotherapist. So I have 5 rules. If you want, you can take a screenshot. The first one is based on proximity. You do not want to go to a physiotherapist just because वो बाजू में रहते हैं, इधर हमारे पास ही है. No, you should call them, you should tell them your problem, you should ask them if they are competent enough to help you with that, or they will usually refer you to somebody who deals with that specific condition. Don't just go to somebody because they live closer to you. Second is based on price. Now, this is the most controversial situation that physios and patients face. See, physiotherapy is professional advice, just like a GP, just like a surgeon. You cannot really put a price on it. It is not a measurable commodity. आप नहीं बोल सकते कि इसका इतना ही लेना चाहिए. Usually it depends on
the level of expertise and how long the person has been in the profession. I can understand that physiotherapy sessions are long, they are very recurrent, but understand that this is also a form of investment on your body, and you shouldn't be putting a price on which therapist you visit. You should go to the one which is best for your condition and way more experience to deal with the condition that you have. Third one is without checking their license or qualification. Again, you barely know the therapist. You are letting somebody manage your body, your disease, and your disorder. It's okay for you to ask them if they are qualified to talk about this or work on this. Or you can verify it online. All the information is available online. You can see the doctors from what college they were and what type of qualification they have. Now this is another controversy we see. Picking a physio who promises Y results in X amount of time. Now I would love to tell my patients कि नहीं ये तो 3 दिन में ठीक हो जाएगा, 5 दिन में ठीक हो जाएगा, but unfortunately that's not true. One person's healing will never resemble other person's healing. How one body reacts will never be the way the second body reacts. And there are multiple factors which govern healing. How fast your body adapts to changes, your age, your occupation, your stress level, how do you sleep, what kind of diet you have. Now, no two people can be identical. So if somebody tells you that this will get fixed in that amount of time, you don't want to go there because it never works. And the fifth one is they outright deny other modes of treatment. A good physiotherapist knows how much he can treat and where is his limit. If a person cannot admit that this is out of their scope of practice and they say, no, you shouldn't do any other therapy, you shouldn't go to your physician, you shouldn't go to your homeopath or whatever, any other pathy, they cannot stop you from getting the best for your health. So if you hear somebody telling you that, no, don't do anything else, only do physiotherapy, that's when you know you need to find a new therapist. Now that you know how not to choose a physiotherapist, you will obviously pick the one which is right for you. But I need to make sure that everybody knows how to make the most out of their session, how to make sure that when they go for their physiotherapy session, they are getting the maximum benefit out of it. So these are a few points. The first one is find a qualified and a registered physiotherapist that you are comfortable with. Physiotherapy treatments usually lasts multiple sessions and for longer periods of time. So you want to make sure that the therapist you choose, you are comfortable with. They're easy to talk to. You feel safe in their presence. Okay. And the second one, and very, very important, be honest about your symptoms, your medical conditions, your habits, your vices, everything. We as physiotherapists, when you give us the information about the substances you consume, about your lifestyle, about your medication, we can help you better recover faster if we have that information. We are never going to judge you. It is beyond our code of medical conduct. We are not here to judge you, but we are here to work with you in order to reach a common goal of recovery. So please be honest about all of your health conditions with us because it helps us to do our best. Third one is ask questions. Clarify your doubts. Don't just sit and Google it. Talk to us. If you have a query, talk to us, call us, text us. We are always more than happy to solve your queries. The fourth one is do not assume that a particular exercise that worked for somebody else will work for you. If you start doing that, अरे उसने दो महीने योगा किया उनको ठीक हो गया मैं भी योगा करूंगा. What if you snap your spine while doing that? Let your therapist be the judge of that. And with physiotherapy, exercise is a prescription. Just how you get your medical prescription for your medicines, similarly for physiotherapy, you get your exercise prescription, which is tailored and customized to your body and your needs. It will never be the same as your friend or your relative. Be consistent in following your home exercise programs. Like I said,
These are not random workouts. They are tailored, prescribed movements. Do not overdo it. Do not underdo it. अगर आपको 5 repetition बोला है, don't do 2 or don't do 20. Stick to 5. There is a reason we are giving you that. And the last and the most important one is always provide feedback. Now picture a very dark tunnel. When you go into it, you will need a flashlight. When you keep pushing the flashlight in front of you, you will see the way. Similarly, you are the flashlight for the therapist. The more information you give about how you feel after the session or how the exercise makes you feel, they will be able to help you to the best of their abilities. If it was a good session, make sure you tell them. If you're feeling better after the session, make sure you tell them. If you're not feeling better after the session, if you're feeling worse, voice it out and give it to your therapist so that they know whether the treatment is going in the right direction or your body needs something else. So these things keep in mind when you visit for your first therapy session or the 10th, doesn't matter. These things are very important. And after this, I think we're done and we can now open for questions. Thank you. थैंक यू मिनाल, इसको शेयर बंद कर देंगे. हाँ, थैंक यू मिनाल फॉर a very nice session and in this I'll also like to share कि अक्सर लोग जो है जब उनसे फिजियोथेरेपी की बात करते हैं तो घरों में वो मसाज और पार्क में जाने वाले योगा और उनकी बात करते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है. लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि फिजियोथेरेपिस्ट भी ट्रेंड और एक डॉक्टर की तरह ही रजिस्टर्ड होते हैं. वो डॉक्टर ही होते हैं, चाहे उनमें कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन वो डॉक्टर ही होते हैं. वो भी 4.5 साल की 6 महीने का इंटर्नशिप करके ही उनको सर्टिफिकेट मिलता है. तो आप पार्क के साथ और मसाज करने वाले और घर में जो लोग आ जाती हैं, कई बार हमने देखा है, तो वो उनसे कंपेयर ना करें. आप अपनी, कई लोग सोचते हैं कि वो एक्सरसाइज जैसे मिनाल ने बताया हम भी वही कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे. उससे नहीं होता है. जिस तरह से डॉक्टर हर पेशेंट को अलग से चेक करके उसके लिए दवा लिखता है, एक ही दवा सबको नहीं चलती है, उसी तरह से एक ही एक्सरसाइज सबको सूट नहीं करती है. किसको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितनी बार करनी है, कितने समय तक करनी है, वो फिजियोथेरेपिस्ट ही आपके लिए टेलर मेड करेगा और डिसाइड करेगा. अक्सर देखा गया है कि हम जब फिजियोथेरेपिस्ट को मिलते हैं, देखते हैं, जब जाते हैं उनके पास, तो अपनी चीजें छुपा लेते हैं कि मेरे को डायबिटीज है या मेरे को ब्लड प्रेशर रहता है. जब डॉक्टर पूछते हैं तो वही कहते हैं सब कंट्रोल में है, सब ठीक है, सब ठीक है. ऐसा नहीं है. अगर आपके दूसरे पैरामीटर्स कितने हैं, क्या रहते हैं, डॉक्टर से शेयर करें, उसको बताएं, ताकि वो आपका जो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है, जो आपके लिए एक्सरसाइजेस हैं, वो आपकी नीड के अनुसार ही बनाए या आपको बताए. तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जिन पर डॉक्टर मिनाल ने आज इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स दिए हैं. आज हमने फिजियोथेरेपी का एक किस्म से इंट्रोडक्टरी सेशन किया है. आने वाले सेशंस और स्पेशलाइज्ड चीज़ों पर होंगे और आपके लिए और अधिक जानकारी देंगे और आपके लिए बेनिफिशियल होंगे. अब आज का प्रश्न के लिए केशव जी हाथ खड़ा करें. केशव जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछिए. यू आर वेलकम. केशव जी अनम्यूट कीजिए. यस. नमस्कार मैडम, फॉर शेयरिंग वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन, हेल्पफुल इंफॉर्मेशन. मेरा पास 2 क्वेश्चन है. एक तो कोई फिजियोथेरेपी रिकमेंडेशन है फॉर रिड्यूसिंग ब्लड शुगर, एंड नंबर 2, वंस अपॉन ए टाइम हम एक फिजियोथेरेपिस्ट पर पास गया था, तो उन्होंने बताया कि मेरा ये है नी पेन है एंड नी का स्टिफनेस है. तो फिजियोथेरेपी ने हमको बताया कि आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ. तो हम तो वापस आ गया, घर में ही रामदेव जी का फॉलो किया एंड दैट इज क्योर्ड. बट मेरा क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी दैट we require the prescription? We cannot directly approach the physiotherapist for their advice. Okay. So for your second question, remember मैंने जब बोला था कि आप जब फिजियोथेरेपिस्ट चूज करते हो, क्वालिफिकेशन देखिए. Don't just go because the shop or the board says physiotherapy. Okay.
There are a lot of quacks out there. So you do not need a doctor's prescription to visit a physiotherapist. If they were a real physiotherapist, they would have taken your case, assessed you, आपका therapy करते और आपको home exercise program देते. You can, मैं वही बात कर रही थी कि there is a need for a family physiotherapist. हमारे GP जैसे होते हैं वैसे जरूरत है, hopefully that will change soon, but you can definitely go to a physiotherapist, a qualified physiotherapist if you have any pain. और आप उनको फोन करके पहले पूछ भी सकते हैं, आपको डायरेक्टली क्लिनिक भी जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स कैन बी हैंडल्ड ऑनलाइन. So in case you don't feel comfortable also, आप पहले फोन करके उनसे बात करिए, उनको पूछिए आपका प्रॉब्लम क्या है, फिर वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे कि क्या. But it is not necessary for you to have a doctor's prescription to visit a physiotherapist. You can walk into a clinic. And for your, what was your first question again? Sugar, diabetes control करने के लिए exercises. Yes, we have a plan for diabetes management in physiotherapy. It comes under cardiovascular physiotherapy, where we work on making sure how you can use exercise to utilize the sugar in your body and keep your sugar level at better levels compared to what they would be otherwise. And it is usually advised for diabetics to work out under the guidance of a physiotherapist and not a personal trainer, because the emergencies that arise with a patient who is diabetic are very different from a person who is normal. So it is advised to do that under the medical supervision of a physiotherapist and not just by themselves. Anything else, Keshav ji? You can unmute and ask. जी. Thank you. Okay, हमारे साथ निदेश जी जुड़े हुए हैं. निदेश जी का एक प्रश्न है. निदेश जी, निदेश मलिक. जिन लोगों को भी प्रश्न पूछना है वो they can raise their hand. निदेश जी नहीं सुन पा रहे हैं. नीरज त्यागी जी एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं. नीरज जी, you can ask your question. हाँ, मेरा क्वेश्चन है टेली फिजियोथेरेपी पे. तो टेली फिजियोथेरेपी, मान लीजिए हम बिल्कुल बेड रेस्ट पे हैं, और तो टेली फिजियोथेरेपी कैसे की जा सकती है? उसमें तो हमें फिर फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ेगी. Okay, so bed rest how? If it is a patient who has had stroke, that cannot be done online. But if you have an injury, let's say पैर में injury हो गई है और आप उसके वजह से bed rest पे है, then I can give you certain things to avoid the pain. नहीं, जैसे लॉन्ग कोविड के बाद ही हिलने डुलने में प्रॉब्लम हो जाती है या ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है. So you can do the exercises in sitting, you can do the exercises in sleeping. You can do that over a video. The only thing you cannot do in telephysiotherapy is if the patient has had a stroke और उसके limbs मतलब vegetative form में उनके limbs कुछ move नहीं कर पा रहे हैं, then you need a physiotherapist present over there physically to make sure that they are moving their limbs, doing the positioning. क्या बीपी वगैरह का भी ट्रीटमेंट हो जाता है फिजियोथेरेपी से? ब्लड प्रेशर? जी. ओके, शुगर का भी, बीपी का भी है? जी. ओके. Thanks. There is a question from Nidesh Malik. Will orthopedic decide you need physiotherapy or not? Orthopedics will not decide whether you need physiotherapy or not. Usually they will tell you कि यहाँ से दवाई लेके या यहाँ से सर्जरी करा के फिजियोथेरेपी जाओ, so that the surgery doesn't go waste. Let's say आपको नी रिप्लेसमेंट तो कर दिया, लेकिन वहां के आजू बाजू के मसल जो सर्जरी करते वक्त थोड़े से कट हुए हैं, उनके ऊपर स्टिचेस हुआ है, अगर वो मसल टाइट रह गए तो आपका नी फोल्ड का फोल्ड ही रह जाएगा. फिर सर्जरी करके मतलब क्या है? You need to make sure these muscles work, your knee works in full range, you can do various activities with your new limb. So physiotherapy is required so that the money you spent on a surgery does not go for a toss. So no, orthopedic will not decide, they will always prescribe it to you. अक्सर ऐसा देखा गया है कि अब जब से लोगों का ऑफिस जाना कम हुआ है, बच्चों का स्कूल जाना कम हुआ है, तो घरों में, क्योंकि ये आप लोग जो चेयर्स और घर से जो काम करते हैं या टेबल्स या जिस तरह से आपका जो वर्किंग स्टाइल है या वर्किंग एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं है, या मैं यूँ कहूँ कि अप टू स्टैंडर्ड नहीं होता,
तो उससे लोगों को अक्सर बैक एक, सर्वाइकल और ये परेशानियां अक्सर देखने को मिलती हैं। तो इन सब के लिए अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप एक, अगर बजाय इसके कि पेन किलर्स खाएं, अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लेते हैं सही टाइम पे, तो आप काफी कुछ अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और समय समय पर वो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। मैंने ये अक्सर एक अपने ही केस में, एक बच्चे के केस में एक्सपीरियंस किया कि एक बच्चे के पैर पे चोट लगी गेम खेलते स्कूल में, और वो छोटा सा हेयरलाइन फ्रैक्चर था। किसी की शिकायत नहीं मैं कर रहा, उन्होंने उसको प्लास्टर कर दिया। प्लास्टर खोलने के बाद कह रहे खेलो ठीक हो जाओगे, लेकिन मैंने देखा कि 3 महीने के बाद भी बच्चा अपनी एड़ी को नीचे रख के नहीं चल पा रहा था। वो अपने पंजों के बल चलता था, एक पैर उसका नीचे होता था, एक पंजों के बल। वो ऐसा नहीं कि उससे चलने में दर्द होता था, क्योंकि वो लंबे समय तक प्लास्टर में रहा तो उसकी चलने की आदत ही वैसी बन गई, उसका माइंड सेट ही ऐसा हो गया और उसका दिमाग भूल गया कि दूसरा पैर भी नीचे एड़ी लगा के चलना है। तो उसको जब फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजा गया तो 2 हफ्ते में ही केम बैक टू नॉर्मल और दोनों पैरों के साथ नॉर्मली चलने लगा और ठीक हो गया। अगर वो उसका समय पर इलाज नहीं होता या उसको फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं भेजा जाता, शायद वो लाइफ लॉन्ग ही उसका स्टाइल चलने का ही चलता, और अगर आप बहुत नजदीक से देखते तो ऐसे लगता कि वो लंगड़ा कर चल रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनका अगर आप ध्यान रखें। अभी नीरज जी ने देखा आपने कि हमारे हेल्थ एजुकेटर हैं, काफी लंबा इन्होंने झेला है, तकलीफ झेली है कोविड में, और अब मैं जब भी इनसे बात करता हूं तो इनकी रिकवरी, के खुद ही कहते हैं कि मेरी रिकवरी जो है पोस्ट कोविड, जो हॉस्पिटल से घर आने के बाद है, वो बेड से धीरे धीरे हर हफ्ते इम्प्रूव हो रही है। और अब जबकि ये बेड से उठ भी नहीं सकते थे, अब धीरे धीरे थोड़े थोड़े दूर पर गाड़ी भी चलाने लग गए हैं। तो ये इम्प्रूवमेंट रेगुलर एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की देख रेख में ये संभव है। तो फिजियोथेरेपिस्ट का अपना रोल है, और हर किस्म के जैसे तकलीफें हैं उसके लिए हर तरह के जो एक्सरसाइजेज हैं, जो है वो एक्सरसाइज या जिस तरह का भी आपको रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होना चाहिए, वो एक एजुकेटेड, एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट ही बता सकता है। एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं रितु बेरी। रितु जी अनम्यूट कीजिए। यस। हाँ जी, नमस्ते। मेरे को पूछना था, आज तक ये सुनती आ रही हूँ कि जब भी कोई दर्द वगैरह होती है तो लोग कहते हैं योगा करो, तो योगा और फिजियोथेरेपी को कैसे कंपेयर करेंगे डॉक्टर शाह? योगा और फिजियोथेरेपी को यू कैन नॉट कंपेयर। सो व्हाट वुड यू रिकमेंड, लाइक क्योंकि मैंने यही सुनती आ रही हूँ बचपन से कि योगा करना शुरू करूँ। So yoga is an activity that you do. It is a hobby. It is something that you do as a part of your routine or as a part of your fitness routine. Now, when doing an activity, when you get injured, when you're facing problem or having a body limitation, you need to bring in an expert who will figure out कि क्या problem है और उसका solution आपको देंगे. That is physiotherapy. So just because you have a pain, you cannot run to yoga कि नहीं मैं योगा करूंगी ठीक हो जाएगा. अगर योगा करते टाइम कुछ रॉन्ग हो गया और वो बोन और भी टूट गया या वो लिगामेंट और भी ब्रेक हो गई, then who will you blame? Will you blame the yoga teacher or will you blame yourself? So you mean to say it's in addition to yoga? No, it is not in addition. No. You can do yoga, but first get clearance from your physiotherapist. If you have pain or something in your body, एक बार अपने डॉक्टर से पूछिए, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से पूछिए कि मुझे ये पेन है, can I participate in yoga? Then he will tell you whether you can or you cannot, or you can participate but with precautions for certain positions. Okay. Got it? Yeah. That clear? Thank you so much. No problem. तो डॉक्टर मीनाल इसको इस तरह से लें कि एक जो स्वस्थ इंसान है, जो एक ठीक ठाक आदमी है, वो अगर योगा करता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कहीं पेन है, कोई इंजरी है या कोई आपको रुकावट है एक्सरसाइज करने में, तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए और उससे पहले क्लियरेंस लेनी चाहिए और फिर योगा करना चाहिए। Am I right? Yes, correct. अक्सर आप लोगों का ये राइट है जब आप पे करते हैं। जी जी प्लीज बोलिए। कोई बीच में? सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि डॉक्टर साहब, एम आई ऑडिबल सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी इंदु जी। हेलो। हाँ जी इंदु जी बोलिए। मैं डॉक्टर मिनाल से ये पूछना चाह रही थी। हाँ सर, मैं डॉक्टर मिनाल से ये पूछना चाह रही थी
कि मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना कि बीपी जैसे डायबिटीज वगैरह क्योर हो सकती है, तो उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट का थोड़ा सा क्लियर कर देंगी वो कि क्या रोल हो सकता है बीपी एंड शुगर को ये करने के लिए, जी जैसा अभी डॉक्टर बता रही थी। Okay. So BP and sugar, they are both metabolic disorders often seen together. Usually sugar और BP में क्या होता है, आपका sugar higher on the higher side रहता है because body is not able to utilize it with the amount of insulin present, and with your hypertension this thing in your body has gone much higher than your normal levels, so the blood pressure. So with exercise, with prescribed exercise at a level of your comfort, it will make sure that your blood pressure levels stay limited. It is a well known fact कि आप जब exercise करते हो, your blood pressure drops a little bit. So consistently when you exercise under a qualified physiotherapist, they can modify your activity in a way where your sugar levels stay in check, your weight stays in check, and also your blood pressure stays in check. So you can use exercise to modify these things in your body. And these conditions are often seen majorly in obese people. I'm talking about diabetes type 2 and your hypertension, not type 1. So physiotherapy can obviously help with obesity and how to lose weight in a very basic and without a fat diet, in a very basic and scientific manner. So physiotherapy can also help with that. It will not cure it. Nothing will cure diabetes or cure hypertension. You have to maintain it and improve it day by day. Okay. मैम एक क्वेश्चन ये आता है फिर कि जैसे आपने कहा कि फिजियोथेरेपी इज ए कोर्स ऑफ 10 days, 12 days और इवन 1 month, बट मेंटेनिंग ए होल लाइफ ए पर्टिकुलर एक्सरसाइज is not it the course of a yoga trainer or some physical trainer? No. So physiotherapy कोई को एक ही सेशन लगता है, कोई लोगों को 6 महीने लगते हैं, कोई लोगों को 3 साल, 5 साल, 10 साल भी लगते हैं. It depends on your condition and how much you can manage it independently. मतलब अगर एक बार हम फिजियोथेरेपिस्ट से समझ लेते हैं कि क्या करना है, हमें कैसे एक्सरसाइज करना है, then we can do it our own selves? No. They will tell you when to progress. They will tell you when to reduce it. Okay, got it, ma'am. Thank you very much. हमारे साथ जुड़ी हुई हैं एक हमारी मेंबर सुनीता संगर, वो कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं पीसीओडी के बारे में. सुनीता जी. जी. Hello, Dr. Shah. I'm really sorry I missed out your initial session. I had some preoccupation. I just wanted to know because there is an increasing data. I mean, you also might be aware that every 1 girl out of 10 girls are having PCOD problems, and all this is related to lifestyle problems, and because most of the girls are not working from home and various other issues. I mean, apparently we don't work that much, and the way we don't work the way our ancestors used to work. But it is a serious problem because it is leading to all sorts of other problems, weight increase and many other things. And mostly we are told that go do good exercise. Doctor tells us that there is no cure, just you have to reduce your weight and do good exercise and focus on nutrition. So I just want to know, because physiotherapist prescribes approved kind of exercises, because when we approach a person who is qualified to train us in yoga or any other physical trainer, I mean, he or she is not qualified, but physiotherapists are qualified to give you a proper kind of an exercise. So my question is that is it possible that through physiotherapy, I mean, through a proper exercise routine and all, PCOD problem can be solved, or physiotherapy in any form, can it be useful? Because, mental problems are increasing day by day, as infertility and many other problems which are increasing, because, this is all related to PCOD. Later on, girls, face these problems. So, I mean, I hope you've understood my question. I just wanted to know about that. Thank you so much. Do you have a daughter by any chance? Yes, I have. Yes. That's why the elaborate question. Yes. Okay. I have a few things to tell you. Yeah. Of course, PCOD
Physiotherapy will not cure it. That is Okay. the bad news. Okay. It will help extensively in managing it. Okay. Okay. What will help in PCOD is your hormone therapy Yeah. and Yeah. whatever your gynecologist guides you to do. But very few people are lucky enough to have a mindset that we want to consult a gynecologist and a physiotherapist. And once you have that mix, it's like a holy trinity. They're working with you. So your gynecologist takes care of your hormonal part, your pharmacological medicines. Then comes physiotherapy in the picture. Now, when you have hormones going haywire, you are also working with her insulin spikes. You're also working with the kind of food you provide. So there will also be a nutritionist in the mix. So these are those two aspects. Now let's come to physiotherapy. Like you said earlier, people say you should exercise daily, but those people are not qualified. Now, we as physiotherapists, we spend 1 year studying gynecology in college. We spend a year studying medicine, pharmacology in college. So we know what kind of medication you're being given, what kind of effect that medication has on your bones and joints, what kind of effect the medication has on your ability to do exercise or on your heart. Like when you're given OC pills, the oral contraceptives to manage PCOD, a lot of people don't know it makes your blood thicker. Yeah. So that reduces your ability to do exercise. Now, only a physiotherapist can connect the dots कि हाँ ये दवाई ले रही है तो इसका ये effect होगा. That's why I can give her exercise in this intensity. We physiotherapists prescribe on a fit principle. F is frequency. How many types? How many times a day will you be doing? FITT. I is intensity. Will you run at 5 kilometers per hour or 15 kilometers per hour? Yeah. Time, how many minutes? One girl can maybe perform for 25 minutes. The other one will get tired in 5 minutes. So we decide the time. And the last one is type. So this is where physiotherapy is needed, that only this type of exercise can be given to somebody who has this level of cardiovascular limit to perform this. Yeah. But when you go to a gym or when you go to a personal trainer, आज हम सब 50 सूर्य नमस्कार करेंगे. Do you know if the 5th girl will faint doing the 4th Surya Namaskar? That's what I'm saying. They will tell her, हाँ आप protein नहीं खाते हो, आप ये नहीं खाते हो. But along with protein, she is having 40 other medicines to help with her PCOD. Did you take that into account? Did you make a list of things that she is eating, the medication that she is on, how dense her bones are? There are so many factors. Yeah. No, actually, yeah. Yeah, go ahead. So we are coming to the end of the session, and before we close, Dr. Anjali, you can ask your question, please. It will be our last question. Thank you, Dr. Chawla, and thank you, Dr. Shah. I'm also a physiotherapist myself, and I was also taking part in a lot of talks when Dr. K.K. Agarwal was doing a lot of show, and we were helping a lot of COVID patients. I'm now the advocacy director for long COVID rehab worldwide. So I want to give a message to everybody who've been recovered out of COVID and post-COVID. We can't hear you. We can't hear you. Your connection is lost. Net problem, sir. Net problem. Let's see. So that's unfortunate. We can't hear her. Let's see next time if she's there. We have come to the end of the program. I think everybody has asked. Anjali, you lost connection. Yeah, the power went away. Sorry, Dr. Yes, Chawla. So okay. my message to everyone is go slow with your bodies, and physiotherapists are the people who are trying to see if people are having जिनको कोई postural hypotension हो रहा है because of long COVID, brain fog हो रहा है, fibromyalgia हो रहा है, तो please see a physiotherapist जो long COVID पे काफी काम कर रहे हैं. And Dr. Chawla, I'll be very happy to do a talk show anytime on long COVID. I can come online and do. Yeah. You're welcome. You give me your contact me on my mobile if you have, or I'll share with you. You can note down.
My mobile is 98103 56833. Once again, 103 56833. Thank you, Dr. I will Chavla. discuss Thank with you. We'll discuss with you. And with that, we come to the end of today's program. I thank you all. And I just would like to share with you that today's talk on physiotherapy was an introductory talk. We started a series. We will have 6 or 7 sessions on physiotherapy in the coming days. It may not be every Wednesday, but it may be once a month or twice a month, depending on the availability of the slot. And we'll be discussing all in detail about physiotherapy, and your questions and everything will also be answered. And at the end of the session, when we'll complete the series, we'll have full session on question answers, and we'll have more physiotherapists and specialists, and we may have a joint session with some doctors, like we have our dermatologist or general physicians, so that they could interact better with you. And the purpose of this session every Wednesday is to educate health educators, educate participants, educate our family members, so that they can help each other in case of emergency. They are there to help. Our purpose is to help the community, and especially during pandemic. Thank you all. See you next week, Wednesday, same time, same channel, with a new faculty. Thank you all. All the best. Alvida. Welcome, Swagat, Khushandid, Ji Ayano. I am Dr. Sanjay Kalra, your friendly endocrinologist, and you are watching Dr. KK's Med Talks, Mondays with Dr. Sanjay Kalra. आज का हमारा non-stop show का 426th episode है. Let's have the headlines for today. Good news coming up on the COVID front. The daily case count in India has remained below 50,000 for 78 consecutive days now. COVID-19 vaccines for children younger than 12 years could be available by October end in the US. The center is conducting a program for skill development to ensure that more healthcare workers and technicians are trained in operating ventilator-assisted ICU beds. Another good news from the US is that COVID-19 vaccines have been found effective in preventing hospitalizations and emergency department visits caused by the Delta variant of the SARS-CoV-2 virus. Over 74 crore COVID-19 vaccine jabs have been administered in India, and all adults in 6 states and union territories have got at least 1 dose. So that is great news for us. While we keep on working hard fighting against COVID, we should not forget about other aspects of health. हमें health या सेहत की बाकी issues के बारे में, बाकी पहलू के बारे में नहीं भूलना चाहिए. तो आज का हमारा topic है. Let's have the topic for today. हमारा topic बहुत फौलादी है आज. As strong as steel,